and I, Ayushi Agarwal, your botany faculty, is here to solve all your problems related to NEET. Today our topic is plant kingdom and we are going to continue the session. I hope you all have seen my last video which was on algae, right? And little bit introduction of bryophytes was also given. Today I am going to continue from there, and today I am going to first complete bryophyte. The notes are already provided to you, and then we are going to start from pteridophytes onward. Clear? Yes or no? Okay, very good. Just give me a moment. Yes, so I hope you all can see my video. Fine. So welcome to all my students. Just a second. So today's lecture is all about the continuation of the previous lecture which we have already done. Right? Okay, just give me a moment. Just a moment. Okay. Correct. So first I'm going to revise that what we have done in the last class. We have actually completed the introduction of the chapter plant kingdom, where I have given you the classification of plant kingdom by lineage. Then we studied so many different classification types like artificial classification system, natural classification system, phylogenetic classification system, plus different types of taxonomies as well. Like then we started with algae, where I introduced about the general features of algae and their classification. Plus, we also did bryophytes, the introduction and classification of bryophyte. Today, there is one important bryophyte called funaria, which is actually the most advanced bryophyte, comes under mosses. तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. Cool? Wait. Can I see the students who have joined me? But how to see that? Wait. Okay. Leave it. Okay. So funaria basically, it is one of the most advanced member of bryophyta. It comes under mosses. So if I talk about the main body of funaria is represented by group of haploid cells. Thus, the body of bryophyta will be what? Gametophytic. And a body which is gametophytic is actually thallus-like, or you can say undifferentiated. Undifferentiated means lacking true root stems or leaves. So, being funaria a bryophyte, the main body of funaria is made up of group of haploid cells that is called as gametophytic body. Now, this gametophytic body is represented by root-like, stem-like and leaf-like structures. It is represented by root-like, stem-like and leaf-like structures. Correct? Now, why am I writing root-like, stem-like? क्यों उसको हम root, stem या leaf ही नहीं बस लिख देते? Because the body is haploid. The body is not made up of group of diploid cells. Correct? This is very, very important. If you understand this, that where we have to use the term root-like or true roots, it will be very easy for you to understand the rest of the chapter. Correct? Now, the root-like structures of funaria, they are called as rhizoids. I'll show it with the help of diagram as well. So, but first try to understand the theory. So, root-like structure of funaria is called as rhizoid. The rhizoids of funaria, beta, they are multicellular. And each cell is separated with the help of oblique septa. That means if suppose this is one root-like structure, this is a rhizoid which is made up of number of cells. So these cells, they are separated with the help of oblique septa like I am drawing right now. Correct? So this is how the root of the funaria, root-like structure of funaria is present. Stem-like structure, they are called as colloid.
Correct? Whereas leaf-like structures are called as phylloid. In case of Funaria, the stem-like structure give rise to two branches. One branch bear the female sex organ, that is your archegonia. Let me draw it like this. And another branch, at the tip of another branch, bears the female sex or the male sex organ, which is called as antheridium. So one branch, on the top of one branch I am drawing antheridium, which is racket shaped. Whereas if I talk about archegonium, then archegonium is flask shaped. So this I am drawing archegonium at the top of one of the branch, and this is your antheridium, which is present on the top of the other branch. Correct? Yes or no? Now, since beta both the sex organs, both the gamete bearing structures are present on the top of the branches and on the same plant, that is why Funaria is considered as monoecious. Monoecious क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर प्रेजेंट हैं. और इसी के साथ हम एक और टर्म यूज करते हैं, ऑटोइशियस. ऑटोइशियस इसलिए कहते हैं बिकॉज बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ब्रांचेस. क्लियर? सो फ्यूनेरिया इज मोनोइशियस एज वेल एज ऑटोइशियस. आई होप बोथ द टर्म्स आर क्लियर. मोनोइशियस का क्या मतलब होता है? जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट हो. एंड ऑटोइशियस का क्या मतलब होता है? जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स अपनी अपनी ब्रांच के टिप पर प्रेजेंट हो. करेक्ट? ओके. नाउ from the colloid, the stem-like structure arises the root-like structure, which are multicellular with oblique septa. Now these sex organs, then they are surrounded by leaf-like structures, which are called as phylloids. So these sex organs are then surrounded by leaf-like structures called as phylloid. This is how the main body of Funaria appears to be. It is undifferentiated, thallus-like, because the entire body is made up of group of haploid cells. Correct? Cool. Now, इसका आप बहुत बड़ा साइज मत इमेजिन करना. Funaria are not very huge. They are hardly 2 to 3 centimeter. साइज में बहुत छोटे होते हैं. आप कभी भी पहाड़ों की तरफ जाओगे ना, whenever you go towards mountains, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो कि जो पहाड़ होते हैं उनमें छोटे छोटे से कुछ ग्रीन कलर के प्लांट्स निकल रहे होते हैं. आई होप सबने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी. तो जो पहाड़ों पे जो वो छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांट टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं ना, वो एक्चुअली ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं. हो सकता है उसमें से कोई एक आध फ्यूनेरिया भी हो, तो उनका साइज बहुत छोटा होता है. दे आर हार्डली 1 to 3 centimeter tall. Correct? Okay, so this is how the main body of Funaria appears to be, which is gametophyte. Now, on this gametophytic body, the gametes are produced. Archegonia is responsible for producing the female gamete, and the nature of female gamete is non-motile. Since this female gamete, since it is non-motile, therefore it cannot be discharged outside. So female gamete is produced within the archegonia and it remains within the archegonia. ठीक, ये कहीं नहीं जाएगा. ये जहाँ पर है ये वहीं पर ही रहेगा. लेकिन अगर हम एंथ्रीडियम की बात करें, जो कि क्या है हमारा, विच इज़ योर मेल सेक्स ऑर्गन. तो अगर हम एंथ्रीडियम की बात करें बेटा, तो एंथ्रीडियम बनाता है आपके मेल गैमीट्स, जिन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज एंथ्रोजॉइड्स. ये कैसे होते हैं? दे आर मोटाइल. इनके पास इनके लेग्स होते हैं. दे हैव देयर ओन लेग्स एंड देयर लेग्स आर एक्चुअली 2 flagella. So question comes in NEET that what is the physiology and morphology of the gamete, male gamete and female gamete produced by Funaria. तो क्या आंसर दोगे उस केस में?
then in that case you are going to answer that female gametes are non-motile plus they are larger in size, whereas male gametes are motile with two flagella and they are smaller in size. करेक्ट. तो अब आपको पता है आर्चिगोनिया बना रहा है नॉन मोटाइल मेल गैमीट. अभी नॉन मोटाइल मेल गैमीट को हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि बेचारे पास पानी में डाल दोगे तो ये कैसे स्विम करेगा, कैसे मेल गैमीट की सर्च में जाएगा. इसीलिए आर्चिगोनिया के अंदर ही मेल गैमीट रहता है. कहीं यहां पर है आपका मेल गैमीट. अगर लास्ट क्लास का लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था. ठीक है, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास का लेक्चर नहीं देखा है प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर वंस अगेन. कूल. चलो अब अगर हम एंथ्रीडियम, इफ आई टॉक अबाउट एंथ्रीडियम, देन इन केस ऑफ एंथ्रीडियम बेटा द मेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड आर मोटाइल. इनके दो फ्लैजिला होते हैं. अब इस वजह से ये तुरंत जैसे ही बनेंगे, अच्छा बनते भी माइटोसिस की मदद से है, ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ. क्यों? क्योंकि एंथ्रीडियम हैप्लॉइड, गैमीट्स हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने का क्या तरीका है? माइटोसिस तरीका है. ठीक, तो अब माइटोसिस की हेल्प से मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड. वंस दे आर प्रोड्यूस्ड दे आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द मेन बॉडी एंड दे कम इन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट कैसा है? You know bryophytes are amphibians, they grow near water, so therefore now the male gametes will come in water where they are going to swim in search of their female gamete. Correct? तो अब क्या होगा? Or who are the three people just watching? Can you just share your names as I cannot see your names on my screen? Just a second. I hope I don't know how to see this. Okay, now since I cannot see who all three people are watching, so it would be better if you just comment something. I don't know, comments also just cannot see in this live session. Okay. राइट, फाइन. सो नाउ ये जो वाटर में हमने अपने गैमीट्स को फिर क्या किया है, हमने इसको डिस्चार्ज करा दिया है. अब क्या होगा? नाउ वाटर में मेल गैमीट्स विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला विद दे आर गोइंग टू स्विम इन वाटर इन सर्च ऑफ देयर फीमेल गैमीट. अब फीमेल गैमीट ऑल्सो हैज टू परफॉर्म सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस और नो? सिर्फ मेल गैमीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना कि बस पानी में आ गया, बॉडी से बाहर आ गया, अब स्विम करके बेचारा पूरा आर्चिगोनिया तक जाए. कुछ तो आर्चिगोनिया ऑल्सो हैज टू टेक सम एफर्ट्स. सो इन दैट केस द आर्चिगोनिया रिलीजेस केमिकल्स. आर्चिगोनिया रिलीजेस सम केमिकल्स लाइक सुक्रोज एंड potassium ion. They are called as chemoattractant. These chemoattractant, they attract the male gamete in the water towards the archegonium, and in the presence of these chemicals, that is sucrose and potassium ion, male gamete, they reach to the archegonium, they enter inside the archegonium, they meet the female gamete, and then the fusion take place to form the zygote. So now you know fertilization took place and the zygote is produced within the archegonium. Thus this type of fertilization is internal fertilization. In case of algae, आपने algae के केस में क्या देखा था? In case of algae, you have observed one thing. And what is that one thing? That the fertilization was taking place externally. Correct? But here in case of bryophyta, the fertilization is internal, that is within the archegonium. Correct? Ab zygote in case of bryophytes, in case of funaria, they do not undergo immediate reduction division.
इनका इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन बेटा नहीं होता है. Now, since I don't have extra page, I'm going to use this page. So, in case of Funaria, the zygote, instead of undergoing reduction division, undergoes mitosis, that is equational division, to first form some group of actively dividing cells, diploid cells called embryo. So remember, bryophytes are the first member of plant kingdom to form embryo. राइट तो अब ये क्या बनाएंगे बेटा, ये एम्ब्रियो बना देते हैं. दिस एम्ब्रियो इज अ ग्रुप ऑफ डिप्लॉइड सेल्स विच फर्दर डेवलप टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड बॉडी कॉल्ड स्पोरोफिटिक बॉडी. द स्पोरोफिटिक बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया is represented by three parts: foot, seta and capsule. Cool. Now remember one thing, this entire process, see, coming back to the main body of bryophyta, this is the stem part, root like structure, branches. The sex organs are present on the top of the branches, autoecious condition. Now, where fertilization took place? Within the archegonium. So, where zygote and embryo formation will take place? Within the archegonium. So, see, this is your archegonium, where fertilization took place, right? And zygote and embryo formation सब इसी के अंदर हुआ है. तो अब क्या होगा? Now, from this, here only the sporophyte will start developing. तो जो sporophyte का development होता है is actually taking place within the gametophyte, or you can say that in case of bryophytes, the sporophyte is attached to gametophyte. And you can say one more thing, that thus thus sporophyte is parasitic over. Sporophyte is parasitic over gametophyte. Why? Because this sporophyte is non-photosynthetic. It cannot prepare its own food. तो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ये सब कुछ काम के लिए किस पे डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है. क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? चलो, बहुत अच्छी बात है. अब आपको पता है स्पोरोफाइट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं. द लोअर पार्ट with which it is attached to a gametophyte is called as foot. ये जो आप कनेक्टिंग स्ट्रैंड देख रहे हो, इसको बोलते हैं सीटा. और इसके ऊपर जो आप स्वोलन स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कैप्सूल. एक बात और याद रखना, गैमेटोफाइट की पूरी बॉडी हैप्लॉइड है. स्पोरोफाइट बोलने का मतलब ही क्या हुआ? डिप्लॉइड. जस्ट रिमेंबर, गैमेटोफाइट इज इक्विवेलेंट टू हैप्लॉइड. Sporophyte is equivalent to diploid. Just remember these two things. Clear? तो ploidy में कभी कोई confusion नहीं होगा. And remember, in NEET beta, majority of the questions are asked on ploidy basis. तो अगर आप इस ploidy के concept को clear रखोगे, I guarantee you many of your questions in NEET paper will be direct and will be easy for you. करेक्ट. चलो, तो ये तो हो गया हमारा स्पोरोफाइट विच इज हैविंग 3 पार्ट: फुट, सीटा एंड कैप्सूल. नाउ स्पोरोफाइट इज एक्चुअली स्पोर बेयरिंग बॉडी. सो नाउ दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं. द सेल्स विद इन द कैप्सूल, दे आर कॉल्ड एज स्पोर मदर cells. These spore mother cells then undergo meiosis to produce haploid spores. अब कैप्सूल के अंदर स्पोर बन गए. अब जब कैप्सूल बर्स्ट करेगा, then all those spores will come out, and when these spores will get the favorable condition, they will start
developing into a new gametophyte. So like this how the life cycle of Funaria goes on. So what is the life cycle of Funaria? The life cycle of Funaria is haplodiplontic. क्यों haplodiplontic है? Because the main phase, just a second, तो क्यों हैप्लोडिप्लॉन्टिक है? क्योंकि जो मेन फेज है वो तो हैप्लॉइड है, बट इट ऑल्टरनेट्स विद पैरासिटिक डिप्लॉइड फेज. मेन फेज इज गैमेटोफाइट that alternates with parasitic diploid phase, that is sporophyte. Thus the life cycle is haplodiplontic. Clear? Yes or no? तो देखो क्या है, आपके पास मेन गैमेटोफिटिक बॉडी है. Now that gametophytic body is responsible for producing gametes. Gametes undergo fertilization to produce zygote. Zygote undergoes division, mitotic division, to produce embryo. That embryo develops into sporophyte. From sporophyte, spores arises, and that spore produces again a new gametophytic body. So like this, the cycle of Funaria is continued. Clear? Yes or no? Yeah, cool, very good. Now moving ahead, this is all about your bryophyta. Now today class is all about pteridophytes, right? It was just the lecture of the last session. So now let's continue with your pteridophytes. With evolution बेटा, जैसी सीरीज में evolution, जैसी प्लांट किंगडम में evolution होता है, from bryophyta came your pteridophytes. Correct? Bryophytes से क्या आ गए अब? Pteridophytes evolved from bryophytes. अभी तक आपने क्या देखा? That bryophytes, they were completely dependent upon, no, not completely, rather they were actually dependent upon water for their sexual needs. They came on land, they started living on land, but they were still dependent upon water for their sexual needs. Correct? तो हम क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलते हैं amphibian nature of bryophyta. Right? Because they start living on land, but still they need water for their growth and development. Right? अब जैसे हम सीरीज में आगे जाते हैं, एवोल्यूशन में हम जैसे ही एक स्टेप आगे जाते हैं, then we come to see pteridophytes. Pteridophytes are slightly evolved from bryophyte. कैसे? सबसे पहला पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन क्या है जो हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है? वो है उनकी मेन बॉडी. द मेन बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज नाउ स्पोरोफिटिक. जैसे आपने ब्रायोफाइट में क्या देखा? In case of bryophytes, you see that the main body is represented by group of haploid cells. Yes or no? So this one is represented by group of haploid cells. But when it comes to pteridophytes, the nature of body changes from haploid to diploid. Thus, the life cycle pattern of pteridophytes changes from haplodiplontic to diplohaplontic. Why? Because the main phase is diploid that alternates with haploid phase. Correct? Right? Now, this is one thing, advanced thing which you see in case of pteridophytes. Now, second thing what happens beta, अब जैसे ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट आफ्टर मियोसिस दे प्रोड्यूस स्पोर्स. इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स बेटा ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज. सारे स्पोर जो मियोसिस के बाद बनेंगे वो सारे के सारे एक ही साइज के होंगे. दैट कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरी. बट व्हेन इट कम्स टू just a second, but when it comes to pteridophytes, then there are two types of pteridophytes.
one which produces homospores and another type which produces heterospores. तो अभी मैं आपको होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर दोनों के बारे में बताऊंगी, बट उससे पहले थोड़े से हम जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं. Just let me delete all these things. Right? You already will get everything in your notes, so you don't have to worry. All these things I have already provided in the last class notes. You can read them and learn them and revise them. Just a second. Cool. Fine. So let's talk about some general features of pteridophytes. Number one general feature में हम क्या बोलेंगे? That the main body becomes what? Sporophytic. Sporophytic means made up of group of diploid cells, well differentiated body, will have true roots, stems and leaves. So main body becomes sporophytic. Number one point. Second, now pteridophytes, they are more evolved as compared to bryophytes. How? Because they produce two types. There are two types of basically pteridophytes. One which show homospory condition and another which show heterospory condition. Homospory means after meiosis, the one which produce same size of spores. Whereas heterospory means the one which produces two different size of spore, some larger ones and some smaller ones. The larger ones are called as megaspores, right? Whereas the smaller ones are known as microspore. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये तो हम बाद में करेंगे. अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि there are some pteridophyte which shows homospory as that in case of bryophyta, whereas some pteridophytes they show heterospory, that means producing two different types of spores. Correct? Cool. Now moving ahead. In case of bryophytes, there are no conducting tissues. There is no xylem, phloem, nothing like that. There are no conducting tissues present in bryophytes. Why? Because the size is very small. I told you they're hardly 1 or 3 centimeter. तो उनको कंडक्शन के लिए कोई जाइलम फ्लोएम पाइप्स की जरूरत ही नहीं होती. वो तो सिंपल डिफ्यूजन से भी अपना काम चला लेते हैं. लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है बेटा, ये तो लंबे लंबे होने लग गए हैं. अब ये तो 1 से 3 सेंटीमीटर जितने छोटे हैं नहीं, तो इनको तो कंडक्शन कराने के लिए पाइप्स चाहिए ना. अब मान लो कोई घर है, वो 1 फ्लोर का है, तो वहां के लोग चाहे तो बिना पाइप सिस्टम के भी काम चला सकते हैं, बिना टंकी के भी काम चला सकते हैं. क्या करेंगे भाई, नीचे से भर के ऊपर ले आएंगे. बट एक कोई बहुत टॉल बिल्डिंग है विच इज ऑफ 4 फ्लोर्स, तो अब जो बंदा 4th फ्लोर पे रह रहा है, द वन हु इज लिविंग एट द 4th फ्लोर, उससे आप एक्सपेक्ट थोड़ी ना करोगे कि वो नीचे जाएगा और पानी हर बार लेकर आएगा. दैट फेलो विल से आई एम नॉट मैड, गिव मी सम पाइप सिस्टम, then only I will live on the 4th floor, otherwise why will I live, right? So वैसे ही pteridophytes are also now tall. They are not as small as algae or bryophytes. So now pteridophytes, they start developing vascular tissues. That is your xylem, bundles of xylem and phloem. Correct? So these pteridophytes are the first ट्रैकियोफाइट्स. ट्रैकिया वर्ड आता है आपके कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम से. सो टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट. Why? Because they start developing the vascular tissues. Am I clear or not?
Good, very good. Now moving ahead, these pteridophytes, they are also known as botanical snakes. इनका दूसरा नाम क्या है? Botanical snakes. क्यों उनको botanical snakes कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस एवोल्यूशन एरा में टेरिडोफाइट्स इवॉल्व हो रहे थे, उसी एवोल्यूशन एरा में इन केस ऑफ एनिमल किंगडम स्नेक्स मींस रेप्टाइल्स इवॉल्व हो रहे थे. तो एक टाइप की सिनोनिम दिखा, मतलब एक टाइप का एक रिलेशन दिखाने की कोशिश करिए बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड रेप्टाइल्स, बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. तो बस उस क्या बोलेंगे उसको, एक हार्मनी दिखाने के लिए द टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज बोटानिकल स्नेक्स. Some pteridophytes which shows homospory, they are also known as amphibians of plant kingdom. Why? क्योंकि ये अभी भी डिपेंड करते हैं ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिमेंबर वन थिंग, नॉट ऑल टेरिडोफाइट्स डिपेंड. सारे टेरिडोफाइट्स डिपेंड नहीं करते, बस वही टेरिडोफाइट्स जो होमोस्पोरी शो करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरस, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. Therefore, Dryopterous kind of pteridophytes will only grow in those regions which are cool, damp, and shady. Am I clear or not? I hope yes. Cool, very good. So अभी तक हमने क्या क्या इसके जनरल फीचर्स पढ़े. That the main body is sporophytic. Some shows homospory, some shows heterospory. They are the first tracheophytes. They are also known as botanical snakes, and they are also known as amphibians of plant kingdom. Correct? चलो, let's move ahead now. और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? लाइफ साइकिल पैटर्न. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द मेन फेज इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक दैट ऑल्टरनेट्स विद नॉट सो डोमिनेंट और नॉट सो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट्स. देयरफॉर लाइफ साइकिल पैटर्न इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक. रिमेंबर दिस थिंग. एनसीईआरटी इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही लिखती है, बस मैं स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल देती हूँ. क्यों? क्योंकि इससे पता चल जाता है कि डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड है एंड रिड्यूस्ड फेज हैप्लॉयड है. ठीक, जो चीज पहले लिखी हो वो डोमिनेंट फेज है, जो चीज बाद में लिखी हो वो रिड्यूस्ड फेज है. इससे ये पता चल जाता है. अदरवाइज एनसीईआरटी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स दोनों के लिए एक ही लाइफ साइकिल पैटर्न का नाम लेती है, विच इज व्हाट? हैप्लोडिप्लॉन्टिक. आई होप इससे कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा. यस और नो गाइस? यस, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. ओके, तो आई होप आपको ये सारे जनरल फीचर्स इसके क्लियर हो चुके होंगे. अब जो और जनरल फीचर्स आएंगे दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन सम टाइम. नाउ लेट्स स्टार्ट वन एग्जाम्पल. अच्छा, एक एग्जाम्पल हम टेरिडोफाइट्स में वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर homosporous pteridophyte and another example we are going to study for heterosporous. Homosporous pteridophyte में we are going to study about Dryopterus and heterosporous pteridophyte में we are going to study about Selaginella. ठीक है, तो आपको दो Dryopterus के बारे में स्टडी करना है. One is Dryopterus and second is Selaginella. Cool. चलो, तो अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास दैट इज ड्रायोप्टेरस एंड इट्स लाइफ साइकिल. तो ड्रायोप्टेरस क्या है आपका? ड्रायोप्टेरस इज बेसिकली अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट whose main body is diploid sporophytic. Main body of Dryopteris. Can you see this diagram? कुछ इस तरीके से हमारा जो बॉडी है ड्रायोप्टेरस की, आप अगर आप डायग्राम देख सकते हो
स्क्रीन पे तो कुछ इस तरीके से उसका डायग्राम होता है. तो they have true roots, stems, leaves and root. चलो बस एक बार जरा मैं इसको हटा देती हूँ. लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन so that I can explain you in a better way. Okay, so can you see this body of Dryopterus? Now the body of Dryopterus, beta, it is having, since it is sporophytic, so they are having true root, true stem and true leaves. True roots are adventitious. Adventitious matlab the roots which arises from any part of the plant body other than radical. So such roots are adventitious. So can you see these roots? These are basically the adventitious roots. Clear? कहाँ से arise करती हैं? They arise from the base of the stem. तो stem की बात है तो stem समझते क्या होते हैं? Now Dryopterus, they have true stems, diploid stems, which are of two type. The above ground stem, ये आपको जो दिख रही है, this above ground stem is called as stipe. And there is some lower ground stem also, as you say in case of ginger, as you see in case of turmeric, which is called as rhizome. So basically this is soil, this is the below ground stem that is called as rhizome. See this? Can you see this part? So this is your rhizome, from where the adventitious roots are arising. See, these are the roots arising. Above this is the stipe. Can you see this stipe? ठीक. And the stipe bear true large sized leaves. Large size means, macro means bada. Phyllis term is used for leaves. So large macrophyllis called fronds. बड़े बड़े पत्ते होते हैं. Can you see these leaves are so big? Correct? Their venation is actually, they are showing, not venation basically, this type of, they show compound type of leaf, na? So the leaf size is large, and such large leaves, they are known as fronds. I hope clear हो चुका होगा सबको that how the diploid body of Dryopterus is actually. So the diploid body of Dryopterus is differentiated into true roots, stems and leaves. True roots are adventitious, true stem two type, above ground stipe, underground rhizome, and the above ground stem, that is stipe, bears large sized leaves called fronds. आगे सबको समझ में इतना? Yes, very good. अब बेटा, there are two types of leaves in case of Dryopterus. जो बड़े बड़े आपको पत्ते दिख रहे हैं, ये दो टाइप के होते हैं. कुछ ऐसे जो सिंपल होते हैं, जिनको हम सिंपली बोलते हैं मैक्रोफिलस लीव्स. करेक्ट? बट कुछ ड्रायोप्टेरस की लीव्स ऐसी होती हैं जिनके लोअर साइड पे, जिनके अबैक्सियल साइड पे आपको ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई देंगे. क्या ये आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं? कैन यू सी दीज डॉट्स? यस और नो? देखो ये जो लीफ है ये बिल्कुल नॉर्मल लीफ है, ठीक, लेकिन यहां पर देखो इसकी लोअर साइड पे कुछ डॉट्स हैं. तो सच लीव्स ऑन द लोअर साइड जिनके ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, दीज डॉट्स आर एक्चुअली स्पोरांजिया. इन स्पोरांजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे. तो सच लीव्स जब बेयरिंग स्पोरांजिया आर कॉल्ड एज स्पोरोफिलस और रिप्रोडक्टिव लीव्स. अब इन्हें रिप्रोडक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? टू गिव राइज टू न्यू यंग वंस. तो स्पोर्स, स्पोरोफिलस लीव से स्पोर्स बनेंगे एंड दी स्पोर्स आर देन गोइंग टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू, दी स्पोर्स आर देन गोइंग टू जर्मिनेट इनटू गैमेटोफिटिक बॉडी व्हिच देन विल प्रोड्यूस गैमीट्स फॉर न्यू जनरेशन. ठीक, तो स्पोर्स आर द सोर्स फॉर द न्यू जनरेशन. इसीलिए इनको हम ऐसी लीव्स को रिप्रोडक्टिव लीव्स भी कहते हैं. Am I clear? So some leaves on the lower side has spores. Such leaves are known as sporophilous leaves.
These leaves actually possess sporangia. मान लो ये लीफ है, इसके लोअर साइड पे ये रहा स्पोरेंजिया, करेक्ट. इन स्पोरेंजिया के अंदर, अगर इन स्पोरेंजिया का सेक्शन कट करोगे तो क्या दिखाई देंगे? बड़े बड़े स्पोर मदर सेल. एंड विद इन दी स्पोर मदर सेल क्या होगा? मियोसिस होगा. क्या बनाने के लिए? स्पोर्स. एंड ऑल द स्पोर्स विल बी ऑफ सेम साइज. सारे स्पोर सेम साइज के होते हैं. दस द कंडीशन इज होमोस्पोरस. राइट. सी लिखा हुआ है, सेल द स्पोरेंजिया अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज. Am I clear or not? Okay, cool. Now, these spores, when the sporangia they burst, these all spores are then released in the environment, and whenever these spores they get the favorable condition, spores क्या है? Spores तो haploid cells हैं, and haploid cells will develop into what? Into a haploid body, and the haploid body is known as gametophytic body. So these spores, when they get dispersed, when they get the favorable condition, they develop into a haploid structure, a heart-shaped haploid gametophytic structure called prothallus. So the main body of of Bryopteris is something like this. From this arises your prothallus, which is heart-shaped, having some unicellular rhizoids which produce gametes again to produce a new body. So this is how the alternation of generation takes place in case of Bryopteris. They have an independent gametophyte and independent sporophyte, but the main is sporophyte that alternates with independent, not so reduced gametophyte. Thus the life cycle pattern is diplohaplontic. Clear? Yes or no? Cool. Just a second, let me erase this and then we'll read something about the gametophyte as well, that is your heart-shaped prothallus. Yes. Okay, the gametophyte of Bryopteris is known as prothallus, which bears, can you see these unicellular rhizoids? These are unicellular rhizoids. This prothallus is monoecious in nature. Why monoecious? That means it has both antheridium, that is the male sex organ, and archegonium, that is the female sex organ, on the same body. ये जो ऊपर notch है, this is how the prothallus is. This part is the apical notch. इसके ठीक नीचे आपका होता है the female sex organ, which is archegonium, और rhizoids की तरफ यहाँ पे कहीं होते हैं इसके antheridium. So both antheridium and archegonium, they are present on the same thallus. इसीलिए इसकी कंडीशन कैसी है? Monoecious condition. Clear? Right? So it is monoecious as both antheridium and archegonium are present on the same thalli. Right? Now next, same hoga as that in case of bryophytes. Male gametes are antheridium. They are going to produce the motile male gametes. This time motility is not due to your flagella. Rather they produce multiciliated male gametes. Right? कैसे gametes बनाएंगे? Multiciliated male gametes बनाएंगे, which will be then soon discharged. ये जैसे ही discharge होंगे, now the archegonium again is going to release the chemical, but the chemical this time is malic acid, not your sucrose and potassium ion. Correct? So malic acid will be released. Now these archegonium which are releasing the malic acid is going to attract the male gametes towards them,
प्लस दे नीड वाटर ऑल्सो टू स्विम, तो पानी की भी ज़रूरत है और केमिकल्स की भी ज़रूरत है, जो कि दोनों इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट फिर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड दैट फर्टिलाइजेशन इज oogamous type. Why oogamous? Because you know that the female gamete is larger in size and non-motile, whereas male gametes are smaller in size as well as motile. तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, oogamous टाइप है, मेल गैमीट स्विम करेगा और आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा, वो भी दूसरे प्रोथैलस में। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, याद रखना ड्रायोप्टेरस क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो मेल गैमीट्स ऑफ वन from one prothallus will go to the female gamete of another prothallus, which is releasing the malic acid. ठीक, मैलिक एसिड रिलीज होगा, आर्चिगोनियम अट्रैक्ट करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, oogamous टाइप होगा, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एंड फ्रॉम दिस एम्ब्रियो विल डेवलप अ न्यू इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। अगेन by true root, stem, leaf and everything, the same cycle is going to continue. So this is the life cycle pattern of Bryopteris. बेटा अगर आपने इतना समझ लिया और अगर आपको जितना मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, इफ यू thoroughly are going through these notes, then things are going to become very easy for you. All questions, जितने भी प्रीवियस 10 से 15 साल में जितने भी नीट के क्वेश्चंस आए हैं, आप इन नोट्स को पढ़ के, इस लेक्चर को सुन के आराम से सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट? सो प्लीज स्टे फोकस्ड। टाइम इज, कहते हैं ना, समय भाग रहा है, टाइम इज जस्ट रनिंग, यू ऑल्सो हैव टू रन अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर समय के साथ नहीं चलोगे बेटा, अगर अभी पढ़ाई शुरू नहीं करोगे, स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, स्टिल अप्रोक्सीमेटली 90-80 days आर लेफ्ट. So now it's a high time that you start revising. You start revising your NCERT. सारे सब्जेक्ट्स की NCERT को बिल्कुल मुट्ठी में कर लो। ये कर लोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान और क्या बोलेंगे ना, बेटर हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, चलो। So I hope the life cycle of Bryopteris is clear to everybody. So this is how the homosporous pteridophytes are. अब जैसे मैंने आपको बोला, हमें एक heterosporous pteridophyte के बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं, little bit we have to study about heterosporous pteridophyte as well. तो कौन सा है एग्जाम्पल? Selaginella. तो हम इसकी बात करते हैं। चलो, तो जरा अब हम सिलाजिनेला की बात भी कर लें। कैसा है सिलाजिनेला, क्या है ये? इट इज अ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, मींस व्हाट, दैट ऑन meiosis it is going to produce two types of spore. So what is Selaginella? It is a heterosporous pteridophyte. करेक्ट? अब है तो टेरिडोफाइट ही, सो मेन बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफिटिक होगी। कैसी होगी? वेल डिफरेंशिएटेड होगी। क्या होगा? इट विल हैव ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। ट्रू रूट्स, अगेन दे आर एडवेंटिशियस इन नेचर। ट्रू स्टेम है बट दैट शोज dichotomous branching, as you see in case of Markentia. This is the soil. The stem is growing lateral to the soil and it divides into two. जो tip of the branch है, it bifurcates into two. This जैसे आपने snake की टंग देखी है, snake की टंग कैसी, it's fork like ना, टंग होती है, दो में bifurcate हो जाती है. This is called as dichotomous branching. So Selaginella stem shows dichotomous branching. Then they possess leaves, but the leaves are of smaller size. तो छोटा मतलब माइक्रो,
लीफ मतलब फिलस. So leaves are there in Selaginella, but they are of smaller in size. Correct? तो मेन बॉडी कैसी है इनकी? स्पोरोफिटिक, मतलब वेल डिफ्रेंशिएटेड. किसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड? इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. Right? Now, true roots are adventitious in nature. True stem, dicot. Now, why adventitious? Because the roots are going to arise from the base of the stem. Stem के base से arise करती हैं. ठीक है? लीव्स का साइज कैसा है? छोटा होता है. अब बिल्कुल सेम चलेगा. Some leaves are normal, but some microphyllous leaves they bear sporangias on their lower surface. Such microphyllous leaves are called as sporophylous leaves. Why? Because they are spore bearing, sporangia bearing leaves. Now, there are two types of sporophylls. One bearing small sized sporangia called as microsporangia. Another small sized leaves bearing mega large sized sporangia called as megasporangia. Getting my point? So, what is how the body of Selaginella is? Let me show you with the help of a diagram. राइट, चलो. ओके जस्ट वेट. तो क्या होगा? अब ये सपोज सॉइल है. दिस इज द सॉइल. Right? The plant is laterally growing, lateral to the soil, and then it branches. The main stem branches into two, dichotomous branching. Sub branches are also arising. From these sub branches, small sized leaves are arising, which are called as microphyllous leaves. ठीक है? Plus some adventitious roots are arising from the base of the stem. So these are adventitious roots. राइट? अब दो टाइप के माइक्रोफिल्स हैं. द माइक्रोफिल्स, द स्मॉल साइज लीव्स आर ऑफ टू टाइप. वन bearing small sized sporangia which are called as microsporangia, and the microsporangia bearing leaf is called as microsporophyll. तो माइक्रोफिल्स में एक तो माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगा आपका, और दूसरी हो जाएगी छोटी साइज की लीफ जिसके पास बड़े साइज के स्पोरेंजिया हैं. दीज बिग साइज स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम. करेक्ट? और इन लीफ का नाम क्या होता है? मेगास्पोरोफिल. अब क्या काम है स्पोरेंजिया का? मियोसिस करके स्पोर बनाना. माइक्रोस्पोरेंजिया इज गोइंग टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, the small sized spore, and megasporangia is going to produce the large sized spore after meiosis called as megaspore. दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. The microspore develops into male gametophyte after discharge, and megaspore develops into female gametophyte. Now you can see that in case of gametophyte, the condition becomes what? Dioecious condition हो जाती है. अभी आपने पीछे क्या देखा था? In case of Dryopteris, where the condition was homospory, जहां एक ही टाइप के स्पोर बन रहे थे, तो वहां पर कैसा गैमेटोफाइट था? इट वॉज मोनोइशियस गैमेटोफाइट. बट ड्यू टू हेटेरोस्पोरी की वजह से डायोशियस गैमेटोफाइट बनना शुरू हो जाते हैं. एम आई क्लियर और नॉट? Yes or no? Correct? Shall we move ahead now? Okay, right, very good. Fine. So हमारे पास दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, द मेगास्पोर एंड द
microspore. The megaspore are going to develop into male gametophyte, whereas the microspore is going to develop into female gametophyte. अब दोनों गैमेटोफाइट देखो अलग अलग बन रहे हैं, मतलब आर्चिगोनिया एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट अब की अलग अलग होगा, ना कि सेम बॉडी पे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायोशियस कंडीशन। वेरी गुड। तो इस चीज को याद रखना, दैट हेटेरोस्पोरी लीड्स टू डायोशियस कंडीशन। क्लियर? राइट। अब लेट्स मूव अहेड। डायोशियस कंडीशन समझ में आ गई। नाउ द फीमेल गैमेटोफाइट इज डेवलपिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट अलग बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग बन रहा है। एक चीज याद रखना बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट जैसी मेगास्पोर बनेगा, soon after formation of the megaspore it's not discharged, rather it is temporarily retained on the body, parent body। जबकि जो माइक्रोस्पोर है वो बनते तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, एंड कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। राइट। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हो जाता है, मेल गैमेटोफाइट डिस्चार्ज हो जाता है। राइट। तो मेल गैमेटोफाइट बाद में एंथ्रीडियम बनाएगा, एंथ्रीडियम से मेल गैमीट्स बनेंगे, दे विल कम इन द वाटर, देन द मेल गैमीट इज गोइंग टू स्विम टुवर्ड्स द female gametophyte which is still retained, the archegonia. The female gametophyte is what? Archegonia, that is still retained on the parent body। ठीक। तो अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? विद इन द आर्चिगोनियम which is still on the parent body. So fertilization in case of Selaginella, which shows heterospory condition, fertilization is going to take place on the parent body. Once fertilization successfully takes place, now this female gametophyte is going to detach, and further development of that zygote and everything takes place independent of the parent body। Correct? So this is how the fertilization process of your Selaginella is, which is different, slightly different from your Dryopteris। Dryopteris में आपने क्या देखा? मेन बॉडी तो ऑलमोस्ट स्पोरोफिटिक है, सेम है, ट्रू रूट स्टेम लीफ है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिफरेंस है कि वहां बड़े पत्ते हैं या छोटे पत्ते हैं, बस मेन डिफरेंस आपने क्या देखा कि सिलैजिनिला के केस में हेटेरोस्पोरी होने की वजह से दो अलग अलग साइज के स्पोर बन रहे हैं। अलग अलग साइज के स्पोर बनने की वजह से अलग अलग गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर डेवलपिंग इंडिपेंडेंटली। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायोशियस कंडीशन, जिसकी वजह से फीमेल गैमेटोफाइट टेम्पररीली रिटेन्ड होता है पेरेंट बॉडी पे, और मेल गैमेटोफाइट सून आफ्टर अटेनिंग 13 सेल स्टेज इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। करेक्ट। फिर वो मेल गैमेटोफाइट अपना मेल गैमीट बनाएगा, पानी में निकालेगा, मैलिक एसिड, पूरा बाकी सारा का पूरा ड्रामा इज द सेम। बस हुआ क्या? गैमेटोफाइट इज शोइंग डायोशियस कंडीशन। करेक्ट। अब partial retainment of female gametophyte is actually a precursor to seed habit। this heterospory की वजह से जो partial retainment of female gametophyte हुआ है, this is a precursor to seed habit, means seed बना सकते हैं। Pteridophytes, they just give the formula to seed formation, but they themselves do not produce seed, जिसका फायदा जिम्नोस्पर्म्स आगे उठाएंगे टू प्रोड्यूस योर सीड्स। Am I clear or not? Yes or no? So this is all about your pteridophytes as well as bryophytes। तो आज के लिए we are just going to keep it till here। In the next class, we are going to study about the details of gymnosperms as well as angiosperms. And in the next class, we are going to complete the highlight of this chapter। I hope
this lecture is going to be of great use to you. आपको इससे कई ज़्यादा benefit मिलेगा. मैंने पूरी कोशिश करी है कि NCERT के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको दिया जाए, which is very some extra capsules should be given to you which are very useful for the NEET point of view. करेक्ट. सो ये वाला जो पोर्शन है आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट दिस पोर्शन वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट सेशन. क्लियर? Okay, so I hope you all enjoyed the session, and please from the next time, if you're watching this session, the recorded session, and if you're liking it, then do give the thumbs up, do like and subscribe to the channel, and try to bring your more friends on this channel so that we all can study together and have good fun. Sure? Okay, so thank you for joining me, guys. See you in the next class. Bye bye, everyone. Take care.